Okay, so this is limit x tends to 0 cos 2x minus 1 by this is cos x minus 1. Okay, so Spush, any idea कैसे कर सकते हैं इसको? No. No. We will take a negative common, and from denominator also we will take a negative common. So this will cancel out. This we will get limit x tends to 0. Now Spush, what is the formula 1 minus cos 2x? सर मैंने ये ट्राई किया था लेकिन हुआ ही नहीं था. 2 Okay, sin square x. this is 2 sin square x. And this one? 2 sin square x by 2. Very good. So this is cancel out. Okay, so now we will write this as limit x tends to 0, and this is sin x by sin x by 2 whole square. So this is equal to limit x tends to 0. Okay, so now if we need to apply the formula in this one, then इसके denominator में हमें क्या चाहिए? X. X. So multiply and divide with x. Similarly sin x by 2, denominator में हमें क्या चाहिए? X by 2. X by 2. X by 2 into this is x by 2 whole square. Okay, so this x will cancel out. Okay, and so this will give you, now put the limit. So limit x tends to 0 sin x by x by this is sin x by 2. Okay, by x by 2, and into you have this. Acha, this is cancel out. So into you have this 1 by 2. Okay. So 1 by 2 means 2 you have over here. This is whole square, और यहाँ भी हम limit put कर देते हैं x tends to 0. Now this 2 will be shift on the top, so इसको हम बाहर ले आते हैं. This will give you 4. Now limit x tends to 0 sin x by x. सर ये 2. G. Limit x tends to 0 sin Okay. x by 2. Okay, x by 2 whole square. So this will give you, this is 4, and in the numerator you have 1, in the denominator you have 1 whole square, so the answer is 4. Okay Spush, this clear? Sir, बस ये था Sir, ये 4 कैसे आया? Bache, try to analyze this simple calculation of 9th and 8th class. अच्छा वो 1. ओके सर. Bache, ये था ना 2 था. Okay, so अब ये जो 2 हो गए Spush, ये इसके डिनोमिनेटर में. ओके, इन द डिनोमिनेटर दिस, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. Yes, sir. Okay. ठीक है, अब इसको हम जब स्क्वायर से बाहर करेंगे, सो दिस विल गिव यू 4. Okay, sir. Sir, मेरे को वो 2 नहीं दिख रहा बस. Okay, not issue. Please note down this. And सर 15 16 भी बता दीजिए. 15 16. Okay. अभी करते हैं 15 16. Sir, done. Done. Okay. So before this 17, you have a doubt in 15 and 16. पहले 16 करते हैं. Okay. 16 is very simple. Limit x tends to 0 cos x by pi minus x. Okay. हमारा first method क्या होता है? First of all, we will put the limits. अगर हमारे पास real number आता है, मतलब not defined form नहीं है, then that will be our answer. So put this cos 0. तो ये कितना हो जाएगा? Cos 0 by pi minus 0. What is cos 0? 1. 1 by pi. Okay sir. Okay. Please note down this. Then we will do next one.
17 हो गया सर 15. Okay, 15th. Next is 15th. 15th is limit x tends to pi sine pi minus x by pi into pi minus x. So let in these types of question, okay, here you have x tends to pi, हम pi put करके check करते हैं तो 0/0 form आ रहा है, so that is not correct. हम इसको solve करेंगे. So whenever you have a limit which is not tends to 0, तो आप क्या करेंगे? Always take let x is equal to pi plus h. Okay, Namra, Noma and Spush. This clear? Yes sir. So Yes, sir. फिर क्या करना है? In bracket you need to write when x tends to pi. When x tends to pi, then h tends to what? 0. 0. है ना? If you will put pi over here, pi cancel हो जाएगा, 0 आ जाएगा. So when x approaches to pi, h tends to 0. So ये आपके पास आ गया h tends to 0, and this is sine. Okay, and this will give you pi minus pi plus h by pi minus pi plus h. This is equal to limit h tends to 0, open this bracket, sine. So this will give you pi minus h, and here you will get pi minus h. So this will give you limit h tends to 0, and this is sine minus h by pi, and this will give you minus h. So this is equal to 1 by pi. Okay, and limit h tends to 0. Pi is a constant, तो हमने limit से outside इसको shift कर दिया, h tends to 0. Now sine minus h. So anyone can tell me what is sine minus h? Sine minus theta कितना होता है? The sin theta. Minus sine theta. Okay, so please note these formulas. Tan minus theta is minus tan theta, and cosec minus theta is equal to minus cosec theta. Similarly, cot minus theta is equal to minus cot theta. Please note down these formulas. Cos positive होता है, minus theta is equal to cos theta, and its reciprocal sec is also positive. So this is equal to sec theta. Okay, so please note down this. And please confirm me once you note this. Sir, done. Done. Okay. So No this. sir रुकिए sir. Okay. Okay. सर तो ये 1 कैसे आ गया? Which one? आंसर एंड में Answer साइन बच्चे अभी नहीं है आंसर, अभी हम कर रहे हैं सॉल्व. ठीक है, 1 by pi क्यों लिखा है? अभी बताते हैं बच्चे, पहले आप इसको नोट कीजिए. हो गया नोट? Noma Yes. and number. Noma, this done? Noma, मुझे आपकी वॉइस नहीं आई. This done? यस सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ गई आवाज. So this is a constant. Pi is a constant. तो ये outside जा सकता है नंबर. Yes sir. अच्छा okay. Okay, now this is sine minus h. So this can be written as minus sine h. And this is minus h. So negative cancel. Now we will put this limit 1 by pi. This is limit h tends to 0. And this is sine h by h. So this is 1 by pi. And what is this? Limit h tends to 0 sine h by h. This one. So final answer is 1 by pi.
Okay, so whenever you have this x tends to except 0, so please first of all try to put this value. अगर 0 by 0 or 1 by 0 form आ रहा है, then always let this x is equal to pi plus h. Okay, and please share the next doubt. 18th. 18th. Okay, start करें next. Note कर लिए सबने? Noma, this time? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is 18th. Okay, so 18th is limit x tends to 0 ax plus x cos x by this is b sin x. ओके सो अब इसको हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है. अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं दिस विल बिकम 0 बिकॉज ऑफ दिस x, बिकॉज ऑफ दिस x दिस विल बिकम 0 और यहाँ ये 0 हो जाएगा. सो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट. ओके, इफ वी नीड टू पुट द फॉर्मूला इन साइन तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? Sir, X. x. वेरी गुड. सो हम क्या करेंगे x प्लस x cos x बाय दिस इज b sin x by x into x. Okay, now अब क्या कर सकते हैं हम? We need to put the limit, but अब ये x इस complete term को divide कर रहा है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं? Limit x tends to 0. इसको कैसे करते हैं? ax plus x cos x by x. ठीक है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर इसको हम इस वे में लिखते हैं, into 1 by this is b sin x by x. ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं है. इस टर्म को यहाँ लिख दिया into 1 by स्क्वायर से लिख दिया हमने. एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. No, sir. Spush? No, sir. Okay, so this will give us limit x tends to 0. Okay, and what this will become? This will become ax by x plus x cos x by x into 1 by b sin x by x. Now this x will cancel out and finally you will get this limit x tends to 0 a plus cos x into 1 by b sin x by x. सर ये क्या हुआ इसमें a plus cos x? बच्चे ये क्लियर है? x कैंसिल हो सकते हैं Okay, sir. and here x will cancel out. Okay, so अच्छा. you will get this a plus cos x into 1 by b sin x. Now put the limit. So limit हम कहाँ put करेंगे? So this is a constant है ना, यहाँ तो नहीं करना. Plus यहाँ put कर देते हैं limit x tends to 0 cos x okay into 1. अच्छा ये b constant है, इसको bracket से बाहर लिख देते हैं, into 1 by limit x tends to 0 sin x by x. So ये क्या हो जाएगा? This will give you 1 by b bracket a plus what's the value of this? Limit x tends to 0 cos x 1. 1. Very good. So this will give you a plus 1 into, and this is what? 1. This is One. also very good, into 1. This is b, so your answer is a plus 1 by b. Okay, any doubt in this? No, sir. Okay, good. Please हम note इसे down. ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम Please tell me the other method, क्योंकि मैथ से different methods होते हैं. बताइए आप कौन सा prefer आंसर करें? तो आया नहीं था वैसे उस मेथड से. मैंने अलग कर दिया था, ax by b sin x कर दिया था और x cos x by b sin x कर दिया था. फिर इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया था और Okay, okay. b by कॉमन ले लिया था. मतलब आंसर नहीं निकला था वैसे. Not issue. नंबर मैथ्स है ना, तो कुछ भी हमारे माइंड में स्ट्राइक हो सकता है. हमारे माइंड में कुछ और, आपका डिफरेंट मेथड होगा, स्पर्श का डिफरेंट होगा, नोमा डिफरेंट. सो दैट्स नॉट अ इशू है ना. सो अब हाँ, बस वही चेक करना है कि आपकी अप्रोच ठीक होगी, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो आप प्लीज बताएंगे मुझे आपने क्या किया. और सब प्लीज नोट करेंगे. आई विल चेक द. सर
जी सर ये लास्ट स्टेप में आपने क्या किया फिर से बता दीजिए। ओके ओके ओके, ये क्लियर है? दिस वन, यस सर। दिस वन। नहीं सर यही ओके पूछना था। ओके, लिमिट हमें पुट करना है। ओके, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन देन यू कैन राइट लाइक दिस। आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो जितने भी आपके पास फंक्शन होते हैं द ब्रैकेट, आप सब में लिमिट पुट करते हैं। ओके, अब कांस्टेंट में कोई फायदा नहीं होता लिमिट पुट करने का, वी विल गेट द सेम टर्म। सो इफ यू हैव अ डाउट देन यू कैन राइट इट लाइक दिस कि आप लिमिट पुट कर रहे हैं, आप यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a, ये क्या था b, हमने बाहर लिख दिया था सो दैट बार बार इसको नहीं लिखना होगा। ओके सो नोमा दिस क्लियर? हमने यहाँ भी लिमिट पुट किया, हमने यहाँ भी किया, हमने यहाँ भी किया। सर यहाँ पे ए भी तो कांस्टेंट हुआ ना। a इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल। सो तो हम फिर इसमें सर उसे डायरेक्टली तो बाहर निकाल सकते हैं ए प्लस वन बाई बी। अब ये चेक करना है, आप कह रहे हैं कि a को हम कहाँ ब्रैकेट से बाहर करें? यस सर। बच्चे बट ये cos के साथ है ना, दिस कंप्लीट टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन विद दिस, ओके इसलिए सर। हम a सेपरेट नहीं होगा ना, b मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सेपरेट हो सकता है। a इज विद दिस cos x, तो वो नहीं करना। ओके सर। now limit x tends to a is a constant, so we will get this one, or cos x will give you 1 and this is 1. यस सर। Okay, okay, number, so will you please tell me your method? यहाँ से हम करते हैं। सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। ओके, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यस सर ओके। है ना? ओके, प्लीज ट्राई टू डू दिस, अगर डाउट होते हैं आई विल टर्न द पेज। ओके, नम्रा ये बताएंगे आप, व्हाट्स योर मेथड? सर रुक के बता रही हूँ। ओके ओके, सर मैंने इन्हें अलग कर दिया, ए एक्स बाय बी साइन एक्स ए प्लस एक्स cos 6 बाय, अच्छा आपने ऐसे किया b sin x and by b sin x, okay then सर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल किसका किया आपने पे? जी नंबर, सर तुम ओके ओके ओके, ओके रेसिप्रोकल हम कैसे कर सकते हैं नंबर? रेसिप्रोकल हम या तो बोथ साइड करेंगे, है ना? सो बोथ साइड तो है नहीं हमारे पास। ओके नंबर, वी हैव जस्ट सिंगल साइड लिमिट x टेंड्स टू 0, सेकंड साइड नहीं है हमारे पास। ओके सर, तो यही गड़बड़ हो गई फिर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके एंड देन अदर डाउट? स्पष्ट हो गया था ये कंप्लीट? यस सर। ओके ओके, प्लीज शेयर योर अदर डाउट्स। और कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर? नो स्पष्ट? सर सर 21। 21, ओके ओके, सर 19 में तो लिमिट डाल के भी मतलब सब करने के बाद भी 0 ही आ रहा था और पीछे भी आंसर 0 ही है। ओके सो 0 इज अ रियल नंबर, गुड। ओके, 1/0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग ओनली 0 देन इट इज गुड। ओके सर। ओके सो नेक्स्ट आउट इज 21, दिस इज सर 20 भी। ओके 20 भी है, अभी चेक करते हैं। सो 21 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x minus cot x, limit x tends to 0, and what is cosec? 1 by sine अच्छा नहीं, g, 1 by sine x. Okay, okay, first of all we'll put directly put, तो ये 1/0 आ रहा है, ये भी 1/0, so this is not correct. हम इसको simplify करेंगे, limit x tends to 0, take the LCM is sin x, so this will give you 1 minus cos x. This will give you limit x tends to 0, and what is 1 minus cos x? This is 2 sine square x by 2
by what is the sin x? 2 sin x by 2 and cos x by 2. Spush, know my number. This clear? Spush. सर यहाँ पे Yes, sir. cos x सर आपने sin x को भी चेंज कर दिया? जी, है ना, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ sin x लिखते हैं then we don't have any advantage. Further solve नहीं होगा. So we have this formula sin 2 सर theta मैंने is तो कर दिया था, मतलब okay. अभी चेक करते हैं आपका सर मैथड. यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते cos x की? cosec directly value means हम x सर x put मतलब कर सर यहाँ पे 0 रख दिया, okay then क्या होता है cosec 0? नॉट डिफाइंड। इसलिए ठीक है. सो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं. ओके एंड यहाँ तक क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? नो No, सर। sir. ओके सो अब क्या करना है हमें? अब हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. ओके आप कह रहे हैं हम x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वैसे करें इसको सॉल्व? किसी बच्चे का डाउट है ना कि हमने साइन को भी चेंज कर दिया? देखिए इससे कैलकुलेशन हमारी काफी रिड्यूस हो जाएंगी. 2 sin square x by 2 and this sin x we will write 2 sin x by 2 and cos x by 2. Okay, so this will give us 2 will cancel out, sin will cancel out, so this will give us limit x tends to 0 and sin x by 2 by cos x by 2 is tan x by 2. Sir, आपने sin x को कैसे change किया? इसमें ये फॉर्मूला होता है sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Yes, sir. तो sin theta क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो रहा था? एंगल हाफ हो रहा था, है ना. sin Okay, theta sir. means So 2 that sin side, theta by 2 cos theta by 2. yes. So what we will do, sin x, so this will change into 2 sin x by 2 cos x by 2. This cancel and we get a tan x by 2. Now if you will put the limit, तो इस पर क्या आंसर आएगा फिर? Push, put this limit, so what is the answer? So tan 0 by 2. नहीं, हाँ, tan 0 by 2, which is tan 0? And what is tan 0? 0. So Tan 0 0. is 0. Very good. This is the answer. Okay. Okay. So next, please note down this. Sir. G. G. Please बताइए, any doubt in this? No sir. Okay. So please note down this and share your next doubt. सर मुझे स्टार्ट में डाउट था। स्टार्ट में था? ओके. नोमा अभी हम थोड़ा लिमिट्स कंप्लीट करें, ठीक है. इफ Okay, वी विल sir. गेट अ टाइम एट द एंड ऑफ द क्लास देन वी विल डिस्कस योर डाउट, अदरवाइज नेक्स्ट वीक, क्योंकि स्पर्श का कल एग्जाम हो जाएगा और Okay, sir. देन वी विल कंप्लीट अ फर्स्ट टर्म जो भी एंड आपके सर डाउट. आप एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करवा दीजिए, क्योंकि सर नवंबर में मेरे ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके नवंबर में आपके ओके विच नवंबर, विच डेट? सर 12th से स्टार्ट है, अभी डेट शीट नहीं आई बट। ओके एंड कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस? यस सर। एंड ओके सर एमसीक्यू पूरा। एमसीक्यू. ओके ठीक है. फिर ऐसे कहते हैं आपकी कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं ना. टेस्ट सीरीज भी ठीक है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सो आप वहां भी प्रैक्टिस करेंगे, हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं. ओके ओके सर। ओके. सो अदर डाउट इज क्वेश्चन नंबर 20. सर रुक जाइए. ओके प्लीज नोट दिस. सर डन. सर 19 भी करा दीजिए. 19th. So 19th. Okay. 19. So what we need to do is, first of all, हम directly substitute करेंगे. Okay. So limit x tends to 0. Okay. Now we will put this limit. So this is what 0 into sec 0. Now what is sec 0? Number?
Namra, what is 60? सर मैं 1. This will give you 0. Okay. ओके Okay. Next out. सर 20 20. Okay. सर 22 भी कर देना 22. Okay. Okay. So first we will discuss 20. Limit x tends to 0. This is sine ax plus bx by ax plus sine bx. Okay. So we need to solve this. ठीक है, फिर फोकस करते हैं हम again on this part. तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ax ax होना चाहिए. So हम क्या करेंगे? We have different methods. हम first of all एक काम करते हैं इसमें, limit x tends to 0. हम इस complete को x से divide कर देते हैं. ठीक है, bx by x and similarly हम यहाँ भी divide कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें फिर b चाहिए होगा bx. So this will give you limit x tends to 0. सर मैं तो सिंपल ax पुट कर दिया था आपने एक से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया था. यस सर ओके 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 ठीक है, इस पर सारे मेथड्स चेक कर लेते हैं फिर. ठीक है, इसको अगर हम सेपरेट. जी सर यहाँ पे हम साइन ax को सिर्फ कर सकते हैं ना डिवाइड x से bx को डिवाइड करने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल कर सकते हैं. अभी हम चेक करते हैं. ठीक है, सारे मेथड्स चेक करते हैं अभी. प्लस दिस विल गिव यू b, x will cancel out, okay, by b, and this will give you a plus this will give you sine bx by x. ठीक है, x यहाँ कैंसिल आउट हम लिख देते हैं इसको. So x will cancel out, x will cancel out. So you will get limit x tends to 0. This is sine ax by x plus b by a plus sine bx by x. Now put this limit. Okay, अच्छा लिमिट भी हम बाद में पुट करते हैं. लिमिट x tends to 0. ये हमारे पास sin ax by x, a हमें चाहिए, so a से multiply and divide, plus b as it is रहेगा, and here a plus, अब यहाँ भी हम sin bx से multiply and divide करते हैं by bx into b. Now we will put the limit. So this will give you limit x tends to 0 and a into sin x by x plus b, and this will give you limit x tends to 0 a plus b sin bx by bx. Okay, now put this limit. So जब आप यहाँ put करेंगे limit, so this will give you a, ठीक है, and this one at this part limit x tends to 0. This will give you sin x by x plus b by सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
So Spush, Noma and Amra, my voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I have some connection issue. हो गया था ये complete 20 नोट किया था. सर आधा ही नोट किया था। ओके 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 इसको जल्दी से हम करते हैं, फिर आप प्लीज नोट कीजिए. साइन एक्स ओके प्लस बी एक्स बाई एक्स बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स बाय एक्स. एक्स हमने डिवाइड कर दिया. You will get limit x tends to 0 and this will give you sine ax by x plus bx by x by ax by x plus sine bx by x. So this will give you limit x tends to 0 sine ax by x इसको a into कर देते हैं plus this will give you b by this will give you x b कर देते हैं sine bx by bx. Now put this limit. So ये हो जाएगा a constant sine x tends to a 0 sine ax by ax plus b by a plus b limit x tends to 0 sine bx by bx. So this will give you a okay into 1 plus b and this will give you a plus b into 1. So this will give you a plus b by a plus b. So this will give you 1. This answer. Okay, please note down this. सर मैंने दूसरे वे से किया था। ओके ओके आपने सिर्फ इस पर साइन ए एक्स के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. यस सर। ओके ओके उससे भी चेक करते हैं. यू विल गेट द सेम आंसर. 1 ही आ रहा है उसमें भी. यस सर 1 ईयर है। ओके ओके वेरी गुड. ठीक है यू हैव बोथ द ऑप्शंस. यू कैन डू इन दिस वे और सिर्फ आप एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओनली दिस पार्ट. यू विल गेट द सेम आंसर. Okay, please note down this and share your next doubt.
22. Next is 22. Okay, before 22, any doubt? Namra, Noma, Sparsh? Sorry, Namra and Noma? No, sir. No, sir. Okay, so next 22. ये आप try कीजिए. This is limit x tends to pi by 2 and this is tan 2x by pi x minus pi by 2. So what's the first method? First of all, we will put this limit directly. We will put this limit. So check कीजिए क्या आएगा. Tan pi आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 by 0. So that's not correct. अब हम क्या करते हैं? When this x is not tends to 0, let x is Pi equal by to 2 plus h. pi by 2 plus h. Very good. Please put this value and try to solve this question. Okay. Please let me know once you complete it. सर आंसर नहीं आ रहा. Answer नहीं आ रहा. What is your answer? होने वाला है. Okay. What is your answer, Namra? tan pi plus 2h by h के आगे नहीं. Pi, okay, 10 pi plus 2h क्या होता है? रुकिए सर. थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव हो जाएगा. 10 positive हो जाएगा. Very good. सर 1. Answer is 2. 2h भी है ना आपके पास? Numerator में you have a tan 2h. So denominator में multiply करना होगा. Sir, tan Okay. pi plus 2h की क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव tan 2h. I will help you. कैसे sir? Okay, so Noma, in this case, we have this all school to college. Okay, so tan is positive in the third quadrant. So जब आपने put किया आपके पास है क्या pi plus 2h. So this is 0, this pi by 2, this pi, this 3 pi by 2, this is 2 pi. So Noma, pi plus 2h क्या lie करेगा? In which quadrant? Third one. Okay, in this one. Tan 2h हो जाएगा. By denominator में h होगा आपका. H tends to 0. Okay. Okay sir. So these two should be same. So multiply and divide with 2. Okay. Sparsh, हो गया complete? Yes, sir. What's the answer? Sir, 2. Very good. Answer is 2. This is correct. Yes, sir. Answer is 2. Okay. Any other doubt?
Any other doubt No, sir. after? No, Sparsh? नो सर यही आपने Yes. 22 तक ही दिया था Okay. Sparsh और सब हो गए थे 23. सर आगे जी. के मैं कर नहीं पाया था, मेरे को बाकी चैप्टर भी रिवाइज करने थे। Okay. सर आपने 22 तक ही जी दिया था नम्रा स्पर्श को मैंने एलएचएल आरएचएल को कॉन्सेप्ट करवाया था, ठीक है, बिकॉज ही हैज एग्जाम टुमारो। आपका और नोमा का मिस हुआ है, नॉट मिस हुआ है, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। ओके सर Okay, so we will start with the next formulas. We have some more formulas, some standard results, some standard results. First is limit x tends to 0 log 1 plus x by x. This is equal to, okay, so please note down this formula. Limit x tends to 0 log 1 plus x and by x, this is equal to 1. Second, we have this formula. Limit x tends to 0 and this is a to the power x. A is any constant to the power variable minus 1 by x, so this will give you log a and base is e. Okay, third, you have this formula. Limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x, this will give you 1. So these three are some other formulas which you need to do, ठीक है। फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में बैक साइड में there are formulas on the basis of this one. सर log और e क्या होता है? Okay. log सर लॉग हम इसमें ही पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में या फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ते हैं बच्ची log is a function, ठीक है। सो वो उसका यूज यहाँ भी है लिमिट्स में, ठीक, एंड रिलेशंस में, क्योंकि सारे फंक्शंस ही होने चाहिए तो ये वहां भी होना चाहिए, सर ठीक है। फर्स्ट टर्म में लॉग वाला पार्ट आएगा क्या सप्लीमेंट्री? बच्चे सप्लीमेंट्री लिमिट्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स में उन्होंने सप्लीमेंट्री पार्ट दिया है, उन्होंने रिमूव नहीं किया, ठीक, बट वो टफ नहीं है, सिर्फ इतने ही फॉर्मुलेज हैं। ओके सर। सेकंड वाले फॉर्मूला में आपने इज इक्वल टू के बाद e कहाँ पे लिखा है? ई अभी समझाते हैं, ई यहाँ है, तो बेस आंसर x टेंड टू 0 ही होगा। जी एक्सटेंड्स टू 0 ही होना चाहिए। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस, फिर उसके बाद डन। ओके हो गया। हो गया। डन Okay, so concept क्या होता है? For example, we have this 10 cube is equal to 1000, ठीक है। So in terms of log क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे? Log 1000 to the base 10, ये बेस आता है यहाँ, उसका मतलब कि 10 raised power क्या होना चाहिए so that you will get 1000? 3. Okay, so log 1000 to the base 10 is 3. Similarly, e is a number which have a value 2 point something. So base यहाँ आता है, base यहाँ आता है. So a to the power x है, -1 by x है. So this will give you log a to the base. And if this is exponential, then this will give you 0. This will give you 1. So you need to do these three formulas. ठीक है? तो यहाँ पे e कोई वेरिएबल है क्या? E is a constant. जैसे a constant है, e is a constant which have a value of 2.7 something. ठीक है, तो हम उसको सिर्फ e से ही डिनोट करते हैं. E is a constant. ठीक है, so e to the power x -1 by x, this will give you a 1. ओके सर। So please note down these formulas. We will try some questions on the basis of this. Please confirm me once you complete it. Certain. Done. So always remember, in this case, this x and this x, this should be same. अगर ये है, then we can write 1. Similarly, this should be same, then we can write log a. So we will try some questions. For example, our question is limit x tends to 0 e to the power 3x minus 1 by x. So this will give you what? Limit x tends to 0. Okay, so these two should be same. These two should be same. So 3x minus 1. So 3x
and multiply with 3. So this will give you 3 limit x tends to 0 and e to the power 3x minus 1 by 3x. So what is this? This is 3 into 1. So answer is 3. This clear? Spush, no my number? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please note down this. We'll and try this question also. This is limit x tends to 0 e to the power 4x minus 1 by x. Please tell the answer. Say 4. Answer is 4. Very good. No my number, you're getting the same answer. Yes, sir. Okay, very good. Please try this question then. Noma, this completed, getting 4. मैं ऊपर वाला पार्ट लिख रही हूँ. Okay. Yes sir, 4 आ गया. 4 आ गया, very good. Please try the next one. सर थर्ड वाले में माइनस ई स्क्वायर का क्या मतलब है? We have only this formula. Okay, we have this formula e to the power x minus 1 by x limit x tends to 0. Okay, this one. So we need to change this into this form. अब हम इसको क्या कर सकते हैं? Limit x tends to 0. This can be written as e square into e to the power x minus e square by x. Okay, so this will give you limit x tends to 0, and from this you will get take a common e square, so ex minus 1 by x. ठीक है स्पर्श? सर एक बार दोबारा बता दो, आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे. Okay. हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? पावर ऐड हो रहा है, सो कैन वी राइट ई स्क्वायर इनटू ई टू द पावर एक्स एंड माइनस ई स्क्वायर बाय एक्स. दिस करेक्ट? यस सर. ओके, स्पर्श न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ सकता है? सर ई ई स्क्वायर. यस सर, ई स्क्वायर. So this is limit x tends to 0. Take common e square. So ये हो जाएगा e to the power x minus 1 by x. ठीक है? So this is e square. So this is limit x tends to 0. E to the power x minus 1 by x. इस पर ये कितना हो जाएगा? This one? सर 1. 1. So this will give you e square into 1. So final answer is square. यस. Okay. So please note down this and then we will start the next part. सर डन. Done. Okay, Namra, done? Yes, sir. Okay, then please try this question. Just give me a minute. Try this. Limit x tends to 5 e to the power x minus e to the power 5 by x minus 5. Okay, please try this one.
सर हिंट दे दीजिए। Okay, so we have a formula when limit x tends to what? 0? यहाँ नहीं है तो क्या Yes, करना sir. चाहिए? Let x is equal to 0? no. हमने कैसे किया जान? 5 plus h 5 plus h. Very good. Okay, so when x tends to 5, h tends to कितना होगा? so 0 0. Very good. So what you will get? Limit h tends to 0. And this is 5 plus h e to the power 5. 5 plus h minus 5. Okay, now please solve it. अब आप कर सकते हैं. Done. Done. Okay, very good. Namra and Spush. Namra and Spush. This completed. 7 minutes Okay. Sir, answer e to the power 5 आ रहा है ना? Answer is e to the power 5. yes sir same e to the power 5 Okay, Namra. This Yes, sir. complete- E to the power 5. Very good. Then please try this. Limit x tends to 3. E to the power x minus e to the power 3 by x minus 3. Please try this. sir done Done. Okay, what's the answer? sir e cube E cube. Very good. Okay, so answer is e cube. Namra, this completed. Yes, sir. Okay, then please try. These are the questions from exercise 13.2 supplementary. Okay, so we are doing from the supplementary part. This is given at the back side of your book at page number 483. So next, please try this one. Limit x tends to 0, e to the power sine x minus 1 by x. Please try this. Always remember these two should be same. Now, there's a hint which I have given you. Please try this. Zero. Not 0. Please check your answer. And no my push. If you have any doubt, then please let me know.
सर मेरा आंसर साइन आ रहा है. Answer is sign. यस सर. Okay, we'll check. Sign. Okay, Sparsh, completed. तो साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद मेरा भी साइन ही आ रहा है, साइन एक्स Okay. हाँ बस almost सर हो मेरा गया. भी तो sin x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तब तो 0 ही आएगा. Okay, we will check. This is x, okay. हाँ यहाँ आपने multiply and divide कर दिया with sin x. So उसको ऐसे करते हैं. We will write like this कि हमने sin से multiply and divide कर दिया. And we have this x, okay. Now put the limit. So limit एक तो आप यहाँ put करेंगे and यहाँ put करेंगे. So limit x tends to 0. This is sin x by x. And this is limit x tends to 0. E to the power sin x minus 1 by sin of x. Okay, what is this answer? This is what? 1 This is what? 1. Okay, so आप क्या कर रहे थे? आप x मिस कर रहे थे. sin x था आपके Yes, पास, that's sir. है ना? आप उसके लिए मुझे 0 बता रहे हैं, that's good. But ये x आपने मिस किया. Okay, so Sparsh, Noma, this clear? सर आपने यहाँ पे x से क्यों किया सर? हमने बच्चे x कुछ नहीं किया, हमने sin से multiply and divide किया. Okay, and this will make a formula for exponential क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए. x, we don't need this x over here. सर अगर आप डिनोमिनेटर में sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे में sin स्क्वायर x हो जाएगा ना? हम बच्चे ये तो था नहीं हमारे पास, हमने तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ना. साइन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में. ओके सर. then please try the next question. नोमा क्लियर हुआ लास्ट क्वेश्चन या है अभी डाउट उसमें? सर थोड़ा बहुत हुआ. ओके ओके, प्लीज टेल मी क्या डाउट है. सर इसको सिर्फ हम sin से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हमने सिर्फ साइन से ही. This is e to the power sin x minus 1 by x. Okay, so हमने क्या किया? साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. ठीक है नोमा. यस सर. अब फॉर दिस वन इसके डिनोमिनेटर में मैं x नहीं चाहिए, वी नीड अ sin x. सो ये जो साइन है उसको हम यहाँ लिख देते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर में sin x है, वेरी गुड. हमें x नहीं चाहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं. और ये जो है e टू द पावर sin x minus 1 और ये जो पार्ट है उसको हम यहाँ लिख देते हैं. अब ठीक है नोमा? यस सर. अभी भी डाउट है? नो सर. सर sin x अपॉन x 1 कैसे आया? इस पर ये तो हम अभी यूज कर रहे हैं काफी दिन से, मतलब कल से आई ओके गेस. सर, यस यस. Okay. Now next question. Next is limit x tends to 0, x into e to the power x minus 1 by 1 minus cos x. Okay, please try this. Zero. Not 0. No, 1. not 1.
Noma and Spush. सर नहीं हुआ मेरे से। हुआ? Okay, first इससे of all नहीं हम होगा। check नहीं हुआ, no issue, x tends to 0, x, okay, e to the power x minus 1 by, अब ये तो फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, है ना, या तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड विद x कर देंगे, दैट्स नॉट इशू, 1 माइनस cos x, यहाँ प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मूला है 1 माइनस cos x, 2 sin x by 2। 2 sin square x by 2, वेरी गुड। नाउ अब चेक करते हैं, टू सॉल्व दिस हमें इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, किस है? in this denominator we need x, यस सर। है ना, सो ये x अब हम क्या कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड हमारे पास ये सर आपकी है वॉइस लैग कर 2 रही है। into sin square, सर आपकी वॉइस just give me a minute, मैं चेक करता हूँ अभी, okay, Sparsh, just give me a minute। ओके स्पर्श एंड नोमा, अब ठीक है, यस यस सर। सर। ओके, ठीक है, फिर करते हैं इसको नाउ, इतना क्लियर है, यस सर। ओके, यस अब सर। हमें क्या चाहिए, टू कांस्टेंट है, इसको हम शिफ्ट करते हैं, 1/2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, e टू द पावर x माइनस 1 हो गया, बाय अब क्या रह गया यहाँ, एक यहाँ x आ गया, एक यहाँ साइन स्क्वायर x/2 हो गया, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है अभी, इज इक्वल टू 1/2, ओके, अब ऐसे करते हैं, सेपरेट करते हैं सबको, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक तो ये आ गया x स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर x/2, एक ये लिमिट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, दिस, ठीक है, सो साइन स्क्वायर x/2 हाँ दिस इज 1 बाय x स्क्वायर, सो और क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिमिट्स भी पुट हो सकते हैं, बट इफ यू हैव अ कंफ्यूजन तो क्या करिए, in this one just write like this, 1/2, this is limit x tends to 0, and write this as x by sine x/2 its whole square, and this is limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x, okay Sparsh, Noma, Namra, ये clear है, यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ करने के, दिस इज sin x/2, तो इसको डिवाइड कर दीजिए विद x/2 एंड मल्टीप्लाई विद x/2, and now tell me the final answer, okay। सर आपने क्या करने के लिए बोला अभी? स्पर्श, इसको अगर हमें सॉल्व करना है देन sin x/2 के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, सर x/2। okay, so divide this with x/2 and multiply with x/2, ओके सर। ठीक है, and then put the limit and share your answer।
1/4। बच्चे नॉट 1/4, वो जो 4 है ना, ये बहुत डाउट है आपका, है ना, वो 4 न्यूमरेटर में होगा. ओके, आई विल टेल यू हाउ. So this is 1/2 and this is limit x tends to 0, x by sine x by 2. Okay, you will divide this with x by 2 and you will multiply this with x by 2 whole square and इसको 1 कर देते हैं, है ना? This 1/2. Now this x by 2. Okay, so ये जो आपका x by 2 होगा 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ये कैसे है, x है, ठीक, फिर उसके बाद x बाय है, साइन x बाई 2 है, ये भी डिवाइड हो रहा है x बाई 2 से, ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x बाई 2 से. सर आंसर इज 2. आंसर इज, हाँ आंसर इज 2, वेरी गुड. ठीक, दिस मल्टीप्लाइंग विथ दिस, तो ये कितना हो जाएगा, दिस यहाँ लिमिट पुट हो जाएगा 2, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 एंड दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0. ओके, x को कैंसिल आउट कर दीजिए, सो 1 बाय साइन x बाई 2 by x by 2 whole square into 1. Okay, so put this limit, ये तो 1 हो गया, so 1 by 2, 2 square, so which is equal to 4 by 2, which will give you 1, so 2. Okay, ओके Noma, सर. okay, Noma, this correct, clear हुआ? Yes, sir. Okay, so please note down this, confirm me, then we will start a new question. Namra, Noma and Spush, please confirm this. Done. Done. Okay, Namra. Yes sir, done. Okay, next you have this question, limit x tends to 0 log 1 plus 2x by x. Okay, first tell me what is this formula, log 1 plus x by x, limit x tends to 0. What is this formula? 1. So these two should be same. Okay, so if this is 2x, then multiply and divide with 2 and share your answer. So 1 plus 2 its power में है ना? नहीं, not in power. Okay, sir. 1 plus 2. Sir 2. Very good. Spush, this is correct. Number and Noma. सर इसे Number. 2 लोग बोलेंगे फिर लोग 2. नहीं, आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, Yes, है ना, yes. 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, Two, so only ये two. कंप्लीट 1 हो जाएगा. नंबर एंड नोमा, दिस रन कर दीजिए सर. सॉल्व कर दें. जी सर. ओके, सो व्हाट इज दिस, फिर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. ओके, सो दिस इज 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज log exponential 1 plus 2x by 2x, so this will give you 1, so 2 into 1 which is equal to 2. Okay, Noma. जी सर, हो गया.
This is the last question of this exercise. Limit x raised to 0 log 1 plus x cube by sine cube x. Okay, please try this question and share your answer. One. Very good. Answer is 1. Good. सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इस पर सेम वे लॉग दीज टू शुड बी सेम है ना, तो ये तो डिफरेंट है, तो हमें करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज log 1 plus x cube, so इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x cube, मल्टीप्लाई एंड Yes. डिवाइड विद x cube. ओके सर. ठीक है, ओके. नोमा, व्हाट्स द आंसर? सर कर रही हो. ओके, सर यहाँ पे लॉग के बाद ई नहीं लिखा हुआ, तो ओके, सर ओके. कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आंसर पे? नहीं नहीं, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ भी नहीं है देन दिस मींस c. ओके सर. सर x क्यूब अपॉन sin क्यूब x आएगा, तो फिर इसमें लिमिट पुट करनी है. जी स्पर्श, सर फिर तो 0 आएगा. 1 आएगा ना स्पर्श, this will give you 1 and this is sine cube x by x cube. Limit x tends to 0 and this is x cube by this is sine cube x. 1 plus x cube by x cube. सर ये तो 1 हो जाएगा. ये तो 1 हो जाएगा, ये भी तो 1 होगा. इसका मतलब क्या है, x by sin x cube, ये ठीक है स्पर्श, यस सर. डिवाइड दिस विद x and मल्टीप्लाई दिस विद x, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया. ओके सर. Noma and Namra getting the same answer? यस सर. Yes, sir. Okay, very good. So Noma and Namra, your just left-hand and right-hand derivative is remaining. All is complete. And Sparsh, आपका हो गया chapter. So please revise all the chapters. ठीक है Sparsh? अच्छा, okay. And Namra and Noma. So please complete this limits. सप्लीमेंट्री हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है जो भी हमने कल होमवर्क दिया था, प्लस ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, आप कुछ नया टॉपिक हमने किया नहीं है, आपके पास कंप्लीट वीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to complete all the questions of the chapters which we have completed: straight line, stats, limits, sequence and series. ठीक है, सो नेक्स्ट सैटरडे कुछ न्यू नहीं करेंगे हम, जस्ट लिमिट्स का हमें करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव व्हिच विल टेक 30 मिनट्स. उसके बाद वी विल डिस्कस योर डाउट्स. सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स का पार्ट नहीं होगा? नहीं, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ओके सर. आंसर आप कुछ टेस्ट के बारे में कहते हो, फिर से बता दीजिए. जी बच्चे, अब टेस्ट सीरीज भी फिर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम काफी स्पीड में कर रहे थे, अभी इतना टाइम नहीं था. सो नेक्स्ट वीक कोई टेस्ट दे सकते हैं आप? सर वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं होती सर. ओके, फिर आपकी चॉइस है. नेक्स्ट वीक मींस दिस कंप्लीट वीक, तो ऐसा करते हैं, लिमिट्स का टेस्ट रखना है एक्सेप्ट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट. नहीं सर, लिमिट्स का मत करिए सर. देन स्ट्रेट लाइन का पहले कर लीजिए. स्ट्रेट लाइंस करना है. जी सर. No, sir. ओके, तो नंबर कौन से चैप्टर के रहे हैं पे?
स्टैटिस्टिक्स सीक्वेंस सीरीज हम्म, नहीं, स्टैट्स नहीं, स्टैट्स में मुझे अभी डाउट है बहुत सारे। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, इस वीक पे कोई टेस्ट नहीं करते हैं, सैटरडे आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो बट नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, आपको कौन सा कंप्लीट करना है? यू नीड टू कंप्लीट द लिमिट्स, स्ट्रेट लाइन करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, एंड स्टार्ट्स करना है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज मेरा हो गया, बस मिसलेनियस को छोड़ के तो फिर सब, मिसलेनियस में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हाँ तो बच्चे, MCQ ओके, तो छोड़ दूं मैं वो। नहीं 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 नहीं, सब करना है, ठीक है, जो सिलेबस में है वो तो करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं ना, आपको करना है क्या? आपके पास 4 आंसर्स हैं, जस्ट गिव द 4 ऑप्शंस। ओके सर। ओके, सो कुछ मिस नहीं करना है, जो सिलेबस में है वो तो हमें करना है। सो प्लीज कंप्लीट दिस वीक, एंड नेक्स्ट वीक फिर हम सारे डाउट डिस्कस करते हैं आपके। सर जो टेस्ट है वो क्या नॉर्मल क्लास में होगा, जैसे हमारी वीकेंड नहीं में नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, निष्कर्ष सर अपलोड कर देंगे आपके पोर्टल पे, ठीक है, टेस्ट पेपर, एंड आपको फिर वहाँ अटेम्प्ट करना होगा। सो इस वीक कोई हम टेस्ट नहीं रखते हैं, पहले डाउट डिस्कस करते हैं सैटरडे संडे, फिर टेस्ट डिसाइड कर देंगे। सर वो MCQ